हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 सोशल साइंस फाइनल ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट तसार ऑफ रसिया बिफोर द रशियन रेवोल्यूशन। नाउ इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर हर एक जानता है, कौन था लास्ट तसार? तसार निकोलस टू। सो जो ऑप्शन सी है निकोलस टू, वो करेक्ट आंसर होएगा हमारा। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मार्क द एंड ऑफ द वेमार रिपब्लिक। ना उनमें से कौन सा इवेंट था जिसकी वजह से जो वेमार रिपब्लिक था वो खत्म हो गया था? वेल, द इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933। एक्चुअली जो एडोल्फ हिटलर था उनको चांसलरशिप ऑफ जर्मनी मिली थी इन द ईयर ऑफ 1933, एंड आफ्टर ही गॉट द चांसलरशिप he passed the enabling act, and इस act के according all the other political parties besides the Nazi party were banned। इसकी वजह से जो वेमा रिपब्लिक था it was ended and the rise of Hitler began। इसलिए the passing of the enabling act is the correct option। फिर बाद में क्वेश्चन 3, what was the slogan of the Bolsheviks during Russian Revolution। जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने लोगों को क्या प्रॉमिस दिया था? दे प्रॉमिस्ड लैंड, पीस एंड ब्रेड। तो जो लैंड पीस एंड ब्रेड है, दिस वाज द स्लोगन ऑफ द बोल्शेविक्स ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन। फिर बाद में क्वेश्चन 4, which of the following years saw the rise of Hitler as a chancellor of Germany। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, इन द ईयर ऑफ 1933 हिटलर अटेंड द चांसलरशिप ऑफ जर्मनी, एंड इसके बाद ही पास्ड द इनेबलिंग एक्ट, एंड दैट्स हाउ ही हैड एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी एंड एंडेड द वेमार रिपब्लिक। इसलिए हिटलर को कौन से साल में मिली थी चांसलरशिप? इन द ईयर ऑफ 1933। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, The cold weather season in India is experienced during which months। जो cold weather season है, also known as winter season, यह season इंडिया कौन से महीनों में experience करता है? India experiences the cold weather season during the months of December to February। Actually जिस महीने ये वीडियो रिलीज हुई है उसी महीने जो cold weather season है वो चल रहा है। तो cold weather season कौन से मंथ्स में चलता है? दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर्स एंड हैवी रेनफॉल थ्रू द ईयर। कौन सा क्लाइमेट है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट है जिसमें हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल होता है? दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज the tropical wet climate। So option B will be the correct option। Now moving on to question number 7, which of the following trees is commonly found in tropical rainforests। जो tropical rainforest होते हैं उनमें से कौन सी species of tree पाई जाती है? Now ये हमारे ऑप्शन है पाइन, टीक, ओक एंड बर्च। Now कौन सा करेक्ट होएगा? The correct option will be teak। Teak is the tree which is commonly found in the tropical rainforests। फिर बाद में क्वेश्चन 8, the western ghats in India are known for which type of vegetation। Now western ghats में कौन सी टाइप की वेजिटेशन होती है? ऑप्शन सी tropical evergreen। This type of vegetation is found in the western ghats of India। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। नाउ ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है। कौन सा इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस? द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है इलेक्शंस को एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट द इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर and that there is no misconduct during the elections। फॉर एग्जाम्पल
जो इलेक्शन कमीशन है, इट सेट्स द बजट फॉर द इलेक्शन कैंपेन. फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा इलेक्शंस में जो मैक्सिमम बजट है इन द इलेक्शन कैंपेन वो है 25 lakhs. वेर्स फॉर राज्यसभा इलेक्शंस मैक्सिमम बजट है 10 लाख. इसके साथ साथ वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को मेंटेन करने के लिए it makes sure that there are equal opportunities for all parties and also prevents the candidates from asking votes through by the name of God. इसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें यूज़ करती है इलेक्शन कमीशन in order to maintain the free and fair elections. So, कौन सा institution is responsible for conduction of elections? Option C, Election Commission of India. Now, moving on to question number 10. Who has the right to vote in a democratic election in India? Now, जो इंडिया है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ऑल सिटीजन्स आइदर एट और अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ caste, जेंडर, रिलीजन, सोशल स्टेटस एट्सेट्रा. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? ऑप्शन बी, सिटीजन्स either at or above the age of 18 have the right to vote. So option B is the correct option. Moving on to question number 11. Which of the following is not a feature of free and fair elections? Now, free and fair election का दो meanings है. Firstly, that the voters have the right to vote for any candidate they want and that they are offered a real choice. And thirdly and secondly, for the candidates that all candidates can participate in the elections regardless of their personal status etc. तो इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है of the free and fair elections followed in a democracy such as India? Disqualification is based on religion. All candidates can participate in any election. इसलिए अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी वो डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन देन दैट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, इट इज़ अनडेमोक्रेटिक. इसलिए जो क्वेश्चन ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 12. द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. नाउ जो लोकसभा के मेंबर थे वो ऑफिस में कितनी देर के लिए रह सकते हैं? फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 13. इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू whom? Well, the executive is responsible to the parliament. Moving on to question number 14. Who appoints the prime minister of India? Now, कौन है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है? इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. He chooses who will be the prime minister. Now, जो prime minister है, he is generally either the leader of the ruling party or the coalition. फिर बाद में moving on to question number 15. Which form of government is present in Germany after World War I? Now, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, डेमोक्रेसी. नाउ आप लोग सोच रहे हैं डेमोक्रेसी क्यों होगा, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए. वेल, जो वर्ल्ड वॉर 1 था इट एंडेड इन 1918 एंड जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ देन जर्मनी सफर्ड डिफीट एंड द एलाइड पावर्स सच एज फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया दे इमर्ज्ड एज विक्टोरियस and they brought many changes in Germany. One such change was the introduction of a democratic government. इसलिए the form of government present in Germany after World War I will be a democratic form of government. Now, question number 16. Which of the following best describes Adolf Hitler's ideology? Now, what did Adolf Hitler believe in? He believed that the Aryan race, the German Aryan race, was superior to any other race and that everyone else was inferior or
अनडिजायरेबल. नाउ ये आइडियोलॉजी जो है ये क्या बोलते हैं इस वाली आइडियोलॉजी को? इट इज़ कॉल्ड एज नाजिज्म. सो द आइडियोलॉजी ऑफ एडोल्फ हिटलर वाज नाजिज्म. Moving on to question number 17. What is meant by veto power in the context of governments? Veto power means the power to reject laws. Moving on to question number 18. Which of the following regions in India is known for its tropical rainforest? इनमें से कौन सा रीजन है इन इंडिया जहाँ पे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसकी तरह एक और एमसीक्यू था इससे पहले, जहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा था? बी, वेस्टर्न घाट्स. इन वेस्टर्न घाट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड और ट्रॉपिकल एवरग्रीन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. The monsoon in India is caused by whom? The monsoon is caused by trade winds, which are also referred to as monsoon winds. Moving on to question number 20 and the final MCQ. What is the highest law-making body in India? Highest law-making body कौन है? The highest law-making body is the Parliament. So option D will be the correct option. Now we will do section B short answer questions in the next video, in the next part. So if you want to see more such videos, then make sure to like and subscribe to our channel. Bye.